In the previous class, we studied the concept of cylinder और इससे relevant जो formulas हैं वो हमने discuss किए थे. We would just go through them quickly to have an idea of their concepts और फिर उसके बाद हमने मज़ीद 3D shapes cover करना है. So if you see a cylinder, you have a circle at the top, you have a circle at the bottom, and you have this region which is actually a curved region and it is vertically facing upwards. अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है किसी भी 3D शेप के लिए तो आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम के लिए बस एरिया को लेकर आना है. एरिया ऑफ वन फेस वुड बी ब्रॉट इन और उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा मिस्ड आउट लेंथ के साथ. जो भी लेंथ आपने मिस कर दी है उसको आप लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे विद द एरिया एंड यू विल एंड अप गेटिंग द वॉल्यूम. मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू सी दिस इज अ सर्कल एट द वेरी टॉप, तो हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ सर्कल और फिर वो लेंथ जो हमने मिस आउट कर दी थी दैट वाज हाइट एक्चुअली इन दिस केस, उसको हमने लिख दिया है यहाँ पर एंड दैट एंड्स अप एज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आ जाता है जो कि बनता कुछ इस तरीके से है कि आप क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ कर्व्ड रीजन, तो कर्व्ड रीजन में पाई आर का होना लाजमी है. सो इट्स मैंडेटरी टू बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ पाई एंड द रेडियस इन कर्व्ड शेप्स. तो आपने पाई आर लिखा है, देन यू हैव अ सर्कल एट द टॉप, a circle at the bottom, and that is actually two circles in the shape. तो आपने यहाँ पर 2 लिखा है और curved region is basically this region. तो curved region की जो length होगी जिसको हम h से represent कर रहे हैं उसको हमने लिखना है यहाँ पर and we will end up getting the curved surface area formula. Now carrying it forward, तो हमारे पास next formula आ जाता है, that is the total surface area. Now total surface area is kind of easy. Total surface area is basically the surface which could be touched and we are going to bring out the area for each of that surface. अब जैसे हम टॉप पर अगर नोटिस करें तो हमारे पास एक सर्कल है यहाँ पर and we can definitely touch it. ओपन सर्कल है ये, तो हम इसको टच कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इस सर्कल को सरफेस में काउंट कर लेंगे. In the same way, we have a circle at the bottom and we can touch it as well. तो हम इस सर्कल को भी अपनी सरफेस में काउंट कर लेंगे. And the last one is this curved region. तो ये कर्व्ड रीजन भी ओपन है, आप इसको टच कर सकते हो, तो इसको भी आपने सरफेस में काउंट कर लेना है. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू पिक अप द फॉर्मूला. तो आपके पास एक टॉप सर्कल था दैट वाज पाई आर स्क्वायर, आपके पास एक बॉटम सर्कल था दैट इज पाई आर स्क्वायर एज वेल, एंड you figured out the curved surface area right over here and that is 2 pi r each. तो आपने 2 pi r each को रखा है यहाँ पर and you ended up getting your total surface area. तो आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और यहाँ से फिर आगे हमारे पास एक केस और आता है जो कि 2017 में असेस हो चुका है एक बार, और वो केस ये था कि हमारे पास सिलेंडर में टॉप पे एक कोन आ गई है. अब क्योंकि टॉप पर कोन आ चुकी है तो मैं इस सर्कल को जो कि टॉप पर मौजूद था पहले अब टच नहीं कर सकता हूं बिकॉज द कोन इज प्रेजेंट इन प्लेस. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज दैट आई एम गोइंग टू टच this circle at the bottom. I can only touch the bottom circle now, so there would only be a single pi r square. ऊपर वाले सर्कल के लिए हमने पाई आर स्क्वायर यूज नहीं करना है इस केस में इफ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द टोटल सरफेस एरिया. और जो हमारे पास कर्व रीजन है उसको हम अभी भी टच कर सकते हैं, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर इट एज वेल इन द शेप, सो इट वुड बी 2 pi r h प्लस पाई आर स्क्वायर. एक लॉजिक आपने जो जहन में रखनी है वो ये कि जब भी कभी टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया पेरीमीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा. लाइक जो कॉन्सेप्ट आप पेरीमीटर में यूज करते थे वही कॉन्सेप्ट आपने टोटल सरफेस एरिया के लिए भी यूज करना है. सो विच एवर साइड यू कुड टच
तो आप उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर में क्या होता था, वी यूज टू ऐड अप द लेंथ, तो जिस साइड को भी हम टच कर सकते थे उस साइड का हम लेंथ कंसीडर करते थे पेरीमीटर के अंदर, और जिस साइड को हम टच नहीं कर सकते थे उसको हम पेरीमीटर के अंदर कंसीडर नहीं करते थे। द सेम गोज विद सरफेस एरिया, जिस साइड को आप टच कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, उसको आप टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड करते हैं, और जिस साइड को आप टच या फील नहीं कर सकते उसको आप सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ विद दैट बीइंग सेड, वी आर कंप्लीटली डन विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिलेंडर। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, otherwise we'll move on to the next 3D shape. Yes, any one of you having any sort of query with any logic of cylinder, or is it all perfectly clear? Yes, every one of you is perfectly clear with all the logics of cylinder. Okay, perfect. तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट 3D शेप की तरफ। सो फ्रॉम द लिस्ट, द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द क्यूब, और साथ में कोन भी है। तो पहले कोन से रेलिवेंट आपको एक लॉजिक मैं कवर करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्यूब की तरफ जाएंगे। Okay, so a cone would actually look something like this, and you have a circle at the bottom. तो इस सर्कल का आपके पास कुछ रेडियस होता है। You have a height over here, and you have a slanted height जिसको आप लेंथ भी कह सकते हो। Now, what we need to understand over here is कि यहाँ पर हमारे पास बन रहा है एक 90 डिग्री ट्राइंगल। So the height, the radius and the slanted height or length are in a right angle triangle. तो एग्जामिनर कुछ केसेस में ये असेस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने हाइट और रेडियस को लेट सपोज यूज करके स्लांटेड हाइट को फिगर आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? यू विल डू दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हिच इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास हो जाएगा स्लांटेड हाइट, परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा हाइट, और आपके पास बेस में आ जाएगा रेडियस, एंड यू कुड फिगर आउट द स्लांटेड हाइट। नाउ इन केस अगर आपके पास कौन से रेलेवेंट कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर वो आपसे पूछ रहे हैं दिस टॉप एंगल, वो इस टॉप एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो आप क्या करेंगे? आप इसी ट्राइंगल को यूज करेंगे, एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल फिगर आउट दिस एंगल राइट ओवर हियर। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना है। एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि 2D शेप्स में जब हम ट्राइंगल्स कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था दैट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद मेंसुरेशन वी नीड टू बी वेरी गुड विद ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास जो सो का टोआ वाला कॉन्सेप्ट था वो आपने यहाँ पर यूज करना है, एंड यू नीड टू फिगर आउट दिस एंगल राइट ओवर हियर। जब ये एंगल आप फाइंड कर लेंगे तो आपका जो कोन का टॉप एंगल होगा दैट वुड एक्चुअली बी डबल देन दिस वन। लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द एंगल ओवर हियर, और ये एंगल मेरे पास लेट सपोज आ जाता है 35 डिग्रीज, तो मेरा कोन जो है उसका वर्टिकल एंगल हमारे पास बन जाएगा एज 70 डिग्रीज। तो हम डबल कर देंगे अपने वर्टिकल एंगल को from this triangular angle, and we will end up getting 70 degrees. Now this question was last assessed in 2014. उससे पहले ही असेस होता रहा है लेकिन 2014 के बाद असेस नहीं हुआ है। So although it is part of our syllabus and it has a good chance to appear up, लेकिन previous years में for almost 9 years it has not been assessed by any chance. तो इस बार भी chances कम हैं, but although it is part of our syllabus तो हमें फिर ये कवर लाजमी करना है और इसको जहन में भी रखना है आप लोगों ने।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो कोन में हमारे पास एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हर एक अटेम्प्ट छोड़कर दूसरे अटेम्प्ट में असेस हो जाता है, वो है कोन और आर्क का कॉन्सेप्ट. सो इफ आई एम हैविंग एन आर्क, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. और इससे अगर मैं कोन क्रिएट करना चाहूं तो मैं कोन कैसे क्रिएट करूंगा? आई विल मेक अप अ कोन लाइक दिस. नाउ इफ यू सी क्लोजली, तो आपके पास जहां पर रेडियस मौजूद था इन द आर्क, तो अब वो रेडियस जो है कन्वर्ट हो गया है स्लांटेड हाइट में. और जहां पर आपके पास आर्क लेंथ मौजूद थी, वो अब कन्वर्ट हो गया है इस सर्कल में. मतलब circumference of the circle would actually be equivalent to this arc length. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने लाजमी याद रखना है. इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर हम ट्राई भी करेंगे वंस वी आर डन विद द like all the formulas of 3D shapes. तो हमने एक क्वेश्चन लाजमी इस लॉजिक का भी कवर करना है. So what you just need to remember from here is that arc length is equivalent to the circumference of circle in the cone. तो यहां से अगर आप आर्क लेंथ फिगर आउट कर लेते हैं, तो वही आपका सर्कमफेरेंस हो जाएगा फॉर दिस सर्कल. नाउ कैरिंग दिस लॉजिक फॉरवर्ड, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी पेयर ऑफ शेप में से है, दैट द रेडियस ऑफ आर्क is going to be the slanted height of the cone. तो ये लॉजिक आपने लाजमी याद रखनी है. बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ऑफनली असेस होते हैं. इवन लाइक बैक इन 2021 इट वाज असेस्ड, और ये जनरली असेस होता है पेपर वन में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ टू लाइक हैंडल दिस कॉन्सेप्ट. तो आपने लाजमी ये याद रखना है कि आर्क लेंथ ऑफ आर्क इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द circumference ऑफ द सर्कल प्रेजेंट इन द कोन. और आर्क लेंथ के साथ साथ जो आपके पास रेडियस था आर्क के अंदर, वो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा स्लांटेड हाइट के साथ इन द कोन. तो ये लाजमी आप याद रखें. इसके बाद हम आगे जा रहे हैं अब, और हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो फार्मूला से रिलेटेड है फॉर द कोन. द गुड थिंग इज कि यहाँ पर हम जो फार्मूलाज लिखने लगे हैं, उनमें से कुछ फार्मूलाज हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट देम. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, so this is your radius and this one is your height. तो आपने अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, यू जस्ट नीड टू पिक अप द एरिया and multiply it with the measured length. Now the area is for the top face as pi r square, and you just need to multiply it with the height, and this is going to give you pi r square h. लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 3 भी करते हैं. नाउ द गुड थिंग इज कि ये फॉर्मूला आपने यूज यहाँ पर नहीं करना है. एग्जामिनर आपको फॉर्मूला दे देंगे फॉर द कोन, सो यू डोंट नीड टू लाइक यूज द फॉर्मूला बाय योर ओन सेल्फ और नीड टू रिमेंबर इट. तो आपने ना तो इसको लॉजिक को याद रखना है, ना ही फॉर्मूला को याद रखना है. ये आपको गिवन होगा, आपने इस फॉर्मूला को डायरेक्टली वहां से कॉपी करना है. क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूला गिवन होगा, बस कॉपी करें और आंसर निकालते जाएं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है जो कि कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड है. सो वी हैव द स्लांटेड लेंथ ओवर हियर, जो कि कर्व्ड रीजन की लेंथ है हमारे पास. दिस इज द कर्व्ड रीजन, और इस कर्व्ड रीजन की लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कमिंग टू द कर्व्ड सरफेस एरिया, सो
द कर्व सरफेस एरिया इज गोइंग टू हैव पाई आर, क्योंकि आप कर्व से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो पाई आर लाजमी होगा. एज यू कैन सी वी हैव अ सिंगल सर्कल, सो इट वुड बी 1 times pi r multiplied by the length of the curved region. So it is actually turning out to be pi r l. Again, the good thing is कि ये फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है. एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के साथ ये फॉर्मूला देंगे. The only formula that you need to remember is actually your total surface area. So for the total surface area, you need to look back onto your cone and see over here कि आपके पास top पर है एक circle right over here, and you have a curved region right at the bottom. तो आपके पास एक curved region है नीचे और साथ में आपके पास एक circle था at the very top. So what you are going to do is you are going to pick up the curved area which is pi r l, and this would be given to you in the paper, and then added up with the top circle area which is pi r square. तो यहाँ से आपके पास total surface area बन जाता है. So you don't need to remember the formula, just need to remember the logic over here, और ये formula आप खुद create कर लेंगे. While for the previous two, the one for like the formula for volume and the one formula for curved surface area is like not to be remembered at all. इनकी logics भी आपको याद नहीं रखनी है. Examiner आपको ये question paper में लिख कर देते हैं. Now carrying this forward, so now we are moving on to the next 3D shape, and that is the cube. अब क्यूब जो है वो एक बहुत ही मासूम सा शेप है हमारे पास, और इस शेप का लॉजिक आप इस तरीके से याद रखें दैट इट इज अ सिक्स साइडेड स्क्वायर. इट इज अ सिक्स साइडेड स्क्वायर. So it would look something like this to you. और इस क्यूब की खास बात यह है कि इसकी हर साइड से लेंथ इक्वल होती है. वेदर बी इट लाइक एनी डायमेंशन, आप कोई सी भी डायमेंशन पिक करें आपको सेम लेंथ सेम वैल्यू नजर आएगी, एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस शेप. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट क्यूब is a six-sided square. तो आपके पास 6 साइड्स पर सेम स्क्वायर मौजूद होता है. I'll just count that down for you. So if you are having a square in the front, you will have it in the back as well. If you are having a square at the bottom, you are going to have it at the top as well. And if you are having a square at the right, you are going to have one at the left as well. तो ये लॉजिक आपने याद रखनी है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमें बाद में फॉर्मूला क्रिएट करने में असिस्ट करेगी. नाउ कमिंग टू द वॉल्यूम, सो द लॉजिक फॉर वॉल्यूम इज लाइक एग्जैक्टली सेम जो कि हमने क्यूब लाइक कोन के अंदर और सिलेंडर के अंदर यूज की थी. दैट वाज टू हैव द एरिया एंड मल्टीप्लाइड विद द measured length. So what we are going to do here is that we are going to pick up the area of the front side. आपके पास यहाँ पर फ्रंट पे एक स्क्वायर है, आपने इस स्क्वायर का एरिया पिक करना है which is actually L square, और फिर एक मिसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करवाना है. So you can multiply it with this one or this one or this one, whichever length you wish to use. क्योंकि सारी लेंथ्स बराबर हैं तो आप किसी भी डायमेंशन को यूज कर सकते हैं. So you are going to end up with L square times L, and that would give you L cube, and that would be the volume for the shape of cube. Now moving forward on to the last formula of cube. तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया. अगर आप लोगों को याद हो जब 3D शेप्स हम कवर कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था दैट व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ कर्व्ड शेप तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करते हो और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करते हो.
But if you are dealing with like a straight faced shape like a cube or a cuboid, तब आपने curved surface area find नहीं करना होता. You are only dealing with the total surface area. Now coming to this total surface area, what we need to remember is कि हमारे पास जो cube है वो 6-sided square है. So if a single square is having an area of L square, तो हमारे पास 6 squares के लिए क्या हो जाएगा times 6, and that would give you 6L square as your final answer. I hope this is perfectly clear. अगर किसी को कोई problem कोई query है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. Yes, anyone of you having any sort of query? Okay, so now we are moving on to the next shape, and that is cuboid. Now cuboid is a rectangular sort of shape. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास होती है आपकी नोटबुक. जिस नोटबुक के अंदर आप अपने नोट्स पेन डाउन करते हैं, उस नोटबुक का शेप क्यूबिक लाइक क्यूबॉइडल शेप होता है, और इस क्यूबॉइड के अंदर आपको रेक्टेंगल्स नजर आएंगे हर तरफ, एंड यू वुड सी that you are being surrounded with 6 similar rectangles. Now coming to this shape, you have the length over here, you have the breadth over here, and you have the width right on the top. तो आपके पास 6 different क्यूब लाइक रेक्टेंगल्स मौजूद हैं क्यूबॉइड के अंदर, और इन तमाम ही रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस डिफरेंट निकलेंगी. We need to first understand each one of them separately, and then we'll go on to the formulas. So right over here in the front, we have a rectangle having length and breadth, while at the top, we are having a rectangle, and that is having the length right over here and the width right over here. So that's your front and top rectangle. इसके बाद आपके पास आ जाता है राइट साइड पर एक रेक्टेंगल right over here. This one is having the breadth right over here and the width over here. तो आपके पास in total 3 separate like properties वाले rectangles मौजूद हैं. Now what you need to do is you need to pick them up and use them into your formulas. So starting up first of all with the volume. तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की लॉजिक क्या थी? इट शुड बी द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द मेज्ड लेंथ. जो भी डायमेंशन आप मेस करोगे वो फिर आपने मल्टीप्लाई करवानी है एरिया के साथ. सो यू हैव द फ्रंट रेक्टेंगल हैविंग द एरिया L टाइम्स B मल्टीप्लाइड बाय द मेज्ड लेंथ. अब लेंथ और ब्रेथ तो हम लेकर आ गए हैं, आपने जो डायमेंशन स्किप कर दिया है वो है विड्थ. So you are going to multiply it over here, and you'll end up getting your formula for the volume. I hope this is perfectly clear. अगर किसी को कोई problem है, you can just ask, and I'll explain it again. यहाँ पर हमारे पास volume आ चुका है. Now I want a confirmation from you people if we would be having the curved surface area over here or we won't. आप में से कोई बता सकता है हम यहाँ पर curved surface area find करेंगे या नहीं? नहीं. Okay, perfect. So now we are going to find the total surface area. Curved surface area इसलिए find नहीं करना है क्योंकि ये एक straight faced shape है. So we are only going to figure out the total surface area over here. And for the total surface area, you have the front rectangle, that is L times B, added up with the right rectangle, which is B times W, plus the top rectangle, which is L times W. Now the good thing is that all of them have their replicas in the opposite
like direction. So if this one is the front rectangle, तो आपके पास एक back side पे होगा rectangle with L times B. Then if this one is the right rectangle, B times W, तो यही left पर भी होगा. And then finally, if you have L times W on the top, you will have L times W on the bottom as well. So what you are going to do is you are going to multiply all of their values with 2. इस तरीके से आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट शेप. तो क्यूबॉइड हमारा हो चुका है कंप्लीट. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट शेप की तरफ एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी sphere. Now we are dealing with sphere and hemisphere together. Okay, so the good thing is कि sphere से related जो भी formulas आप cover करते हैं वो सारे formulas आपको already given होंगे, so you don't need to remember their logics or the formulas. You just need to understand the concept of hemisphere being driven from the sphere actually. तो sphere से हम hemisphere कैसे बनाते हैं ये आपने याद रखना है, और hemisphere का एक formula है वो आपने याद रखना है and you would be good to go. So starting up with the sphere, first of all, it is basically just like a circle but in 3 dimensions. Like आप अगर sun की बात करें तो sun जो है वो एक ball की form में है and that is a sphere. आप अगर एक football की बात करें या आप एक like basketball की बात करें तो वो भी spherical होते हैं shape में. If you see them from any angle, from any dimension, they would look like a circle to you. तो स्फीयर जो है वो एक 3D सर्कल होता है जिसको आप टच कर सकते हैं और उसमें सेंटर से आपके पास रेडियस होता है जो कि हर डायमेंशन पर, हर पोजीशन पर सेम रहेगा. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि आपका जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम आपको गिवन होगा एंड दैट वुड बी 4/3 पाई आर क्यूब. अब ये फार्मूला कैसे बना, क्यों आया, ये हमारा कंसर्न नहीं है बिकॉज वी वुड बी प्रोवाइडेड विद दिस फार्मूला, so we don't need to remember this formula at all. Now moving forward, the next formula is actually your curved or total surface area, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर रहता है. So it's 4 pi r square. Now again this formula is not to be memorized or remembered, ये भी आपको given होगा पेपर में. Now we are done with the concepts of sphere. तो अब हम जा रहे हैं हेमिस्फीयर की तरफ, और हेमिस्फीयर जो है वो एक्चुअली सर्कल या स्फीयर को हाफ कट करने पर बनता है and it would look something like this. Now it is the exact same shape of a bowl which you generally use in your households. जो आप अपने किचन्स वगैरह में बाउल चेक करते हैं, जो आपको बाउल नजर आता है वो बाउल हेमिस्फेरिकल होता है. Now this bowl is actually having a radius over here, और इस बाउल की खास बात यह है कि ये स्फीयर से कट आउट होकर बना है, तो इसके फॉर्मूलाज स्फीयर से ही ड्रिवन होंगे. व्हाट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इज कि यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम है, क्योंकि प्रीवियसली इट वाज 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब को लिया हमने, एंड सिंस वी आर कटिंग द स्फीयर इनटू हाफ, 2 पीसेस कर दिए हमने स्फीयर के, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं एंड वी एंड अप गेटिंग 2/3 पाई आर क्यूब. बट द गुड थिंग इज कि ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है. आप 4/3 पाई आर क्यूब से अपना वॉल्यूम फाइंड करें स्फीयर के लिए, और फिर हेमिस्फीयर में अगर आप डील कर रहे हैं तो आखिर में आंसर को डिवाइड बाय 2 कर दें. दैट्स कंप्लीटली ओके.
and that's completely acceptable by the examiner. Now, moving forward onto the total surface area. Now, for the total surface area, you have the previous formula is 4 pi r square. तो आपने क्या करना है, 4 pi r square को पकड़ना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है स्ट्रेट अवे, एंड दैट वुड गिव यू हाफ ऑफ द स्फीयर. तो आपके पास 2 pi r square बन गया है. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर स्फीयर को नोटिस करें तो स्फीयर वाज जस्ट अ राउंडेड बॉल, लेकिन हेमिस्फीयर में केस डिफरेंट है. वी हैव a shape like this and we have a circle at the top as well. ये एक न्यू फाइंडिंग हो गई है हमारे हेमिस्फीयर में. तो स्फीयर में ये सर्कल जो कि सेंटर में आपको टॉप पे नजर आ रहा है वो मौजूद नहीं था, लेकिन हेमिस्फीयर में आ चुका है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पायर स्क्वायर ऐड करवा लेंगे फॉर दिस रेड सर्कल ओवर हियर. तो इस रेड सर्कल के लिए मैंने यहाँ पर पायर स्क्वायर ऐड करवा लिया है. सो इट इज गोइंग टू एंड अप एज 3 पायर स्क्वायर. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ 3 पायर स्क्वायर. आपने बस लॉजिक याद रखनी है दैट यू गॉट दिस पार्ट by the total surface area of a sphere divided by 2. तो आपके पास ये पार्ट आ गया है और यहाँ पर this one is the area of newer top circle in hemisphere. तो ये लॉजिक आपने याद रखनी है, एंड दैट वुड गिव यू द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर हेमीस्फीयर. नाउ वी आर डन विद स्फीयर एज वेल एज हेमिस्फीयर. तो अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट शेप्स की तरफ, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द प्रिज्म एंड द पिरामिड. नाउ फॉर द पिरामिड, again we have a good news that the formulas would be given and the pyramid would actually have a base. It could be like a square, it could be a rectangle, or it could be any shape at the bottom. तो बॉटम पे कोई भी शेप हो सकता है. सो इट कुड बी अ रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म पिरामिड, और इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ पिरामिड. लेकिन जो साइड्स होंगी वो आपको ट्रायंगुलर ही नजर आएंगी. So you would see that although the base is rectangular, लेकिन जो sides हैं वो triangular ही हैं हमारे पास on all sides. तो ये pyramid की एक speciality है which differs it from the prism. Prism में क्या logic होती है वो हम आगे cover करेंगे. Now what you have got over here is that you have triangles on the sides and you have a square or rectangle on the bottom. Now you have this core center of the pyramid. ये आपका बिल्कुल सेंटर है बेस का on the pyramid. So right from the top until here you have your height. तो यहाँ पर आ जाती है आपकी height, and this is going to be represented by h. Now examiner usually like assesses the students on the volume of pyramid, लेकिन कुछ केसेस में उन्होंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी क्रिएट करवाया था which looked something like this. Okay, so this is your right angle triangle. We have a 90-degree angle over here, and this triangle is having the height over here, and this is your length right over here. तो ये आपसे कह सकते हैं कि आप slanted height find कर दें for this pyramid, which is right over here, this one. तो ये slanted height आपसे find करने को examiner कह सकते हैं right over there. और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यूज करना है Pythagoras theorem, which is h square is equals to p square plus b square.
So what we did with the cone is going to be done over here as well. लेकिन ये बहुत like rarely नजर आएगा आपको. So it's not that often. Usually what the examiner assesses the student is regarding the volume of pyramid. And the good thing is कि pyramid के लिए volume आपको given होगा. It's 1/3 base area times height. You don't need to remember this formula. आपको ये formula given होगा और examiner जो है वो हमेशा आपको formula देकर आपसे base area पूछ सकते हैं. So he would give you the volume, he would give you the height and inquire you regarding the base area. तो आपने base area figure out करना होता है. So in most of the cases we are found like asked to find the base area, so we would be finding the base area only. अब यहाँ से आगे हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया. सो फॉर द पिरामिड द लॉजिक ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज एग्जैक्टली सेम एज एनी अदर 3D शेप. आपने सारे साइड्स के एरियाज को और जो आपका बेस है उसके एरिया को एड अप करना है एंड यू वुड गेट द टोटल सरफेस एरिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया का मैं लॉजिक लिख देता हूं यहाँ पर, ऑल्दो इट हैजंट बीन असेस्ड सो फार इन द पेपर्स. सो इट वुड बी द सम ऑफ all areas in the shape and that includes the base as well. Now coming to the last shape and that is a prism. So prism is actually going to have a certain type of shape in the cross section. Like I am having a hexagon over here और इन hexagons को हम actually connect करते हैं rectangles के through. So we will have rectangles over here connecting each side. तो आपको यहाँ पर rectangles नजर आ जाएंगे बहुत सारे and you would observe that all of your sides are rectangular right over here. तो ये एक difference है between the prism and the pyramid. So the pyramid would have triangular sides while the prism would have the rectangular sides and the pyramid would be having the triangular sides. तो pyramid में आपने देखा होगा हमारे पास triangles थे side पे, जबकि prism में आप देख रहे हैं that we have the rectangular sides. So that is the core difference between the prism and the pyramid. Now coming to the concept of prism, तो prism में आपके पास ये होता है आपका cross sectional area. So this is your cross sectional area and this one is like from here at the very center until here at the center is going to be your length or height. तो आपके पास length या height आ चुकी है. Now what you need to do is you need to pick them up and apply the formula of volume. So the volume would end up as the base area, or you could term it as the cross sectional area multiplied by the length, and you would end up getting the volume of prism. ये concept भी ज़्यादा assess नहीं होता है, it's not that important, लेकिन ये हमारे syllabus का part है, so we should be aware of it. Now we are done with all the relevant formulas and logics of mensurations. I'm just going to give you the unit conversion concept और उसके बाद हम अपनी आज की क्लास को wind up करेंगे. So for the unit conversion, generally the examiner assesses us on the area and volume units. तो अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो आपको याद होगा that you are dealing with 1 meter equivalent to 100 centimeter. लेकिन if I am going from 1 meter square to centimeter square, तो हम क्या करेंगे, हम 100 का भी स्क्वायर कर देंगे and we would end up getting 1 meter square equivalent to
10,000 centimeter square. Then if I'm having 1 meter cube, so that would be 100 cubed with the centimeter cube. तो ये बन जाएगा आपके पास 1 meter cube equivalent to 1 million centimeter cubes. And the last thing is that 1 meter cube would be equivalent to 1000 liters, and 1 liter is equivalent to 1000 cm cubes. तो ये आपने लॉजिक्स याद रखनी है, ये पेपर 1 में असेस होती हैं. दे आर ऑफनली सीन इन पेपर 1. पेपर 2 में आज तक असेस नहीं हुई है. तो एग्जामिनर क्या करेंगे, आपको सारी डायमेंशन सीएम क्यूब में देकर आपसे वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में पूछ लेंगे. तो आपने फिर वॉल्यूम को फाइंड करना होगा बाय कन्वर्टिंग. तो पहले तो आप वॉल्यूम फाइंड करते हो फॉर्मूला से, देन यू अप्लाई दिस लॉजिक ओवर देयर एंड फिगर आउट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. I hope this is perfectly clear. I need a confirmation from you people if all of you are like perfectly clear. या किसी को कोई problem कोई theory है तो पूछ लें. Yes, are you all perfectly clear? Yes, any one of you having any sort of theory? Okay, done. So now we are done with the logics of mensuration. We are done with all the formulas of it. We are going to do a past paper session in the next class, inshallah, and then we'll be done with our chapter of mensuration. So see you then, inshallah, in the next class. Take care. Allah Hafiz.